अब मैंने आपको दो सतह बताई, एक तो इंसान की सतह है, उसके नीचे जानवर की सतह है, और उसके ऊपर कौन सी सतह? सबसे बेहतर इंसान कौन है? अब मैंने जो डेफिनेशन दिया उसी में आप बेहतर डेफिनेशन बनाइए। कोई एक उठ के बोलिए कि भाई आपने जो डेफिनेशन बताया उसमें एक्सेल डेफिनेशन क्या है? जो डेफिनेशन में 3 अल्फाज यूज किया ना, एक तो है शऊर, दूसरा अख्तियार, और तीसरी चीज मैंने कही अखलाकी वजूद या अखलाकी हिस्स। तो सबसे बेहतर इंसान वो है जो खुदा शऊरी रखता है ना, और अपने पूरे के पूरे अख्तियार को अपना अखलाकी हिस्स के क्या करता है? ताबे करता है, या अपने अल्लाह के अहकाम के क्या करता है? ताबे करता है। जब आदमी ये कर लेता है तो किस सतह पे पहुंचता है? हाँ, क्या है? बंदगी की सतह। वो क्या बन गया? खुदा शऊर, अल्लाह का बंदा बन गया। तो जब तक कि हम इंसानों को ये समाजी जानवर से निकाल करके उनको एक हायर गोल नहीं देंगे कि भाई ये बंदगी का गोल है, ये तुम इंसान तो हो ही, लेकिन तुम्हारे हायर गोल क्या है? बंदगी। और फिर इसके लिए हमको जो जरूरत पड़ती है वो है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को आप सबसे इंट्रोड्यूस करें। इंसान ने अपने को क्या बनाया? जानवर बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया में एक इंसान को भेजा जिसको हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? आप सबके लिए अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, ये नबी कामिल है, ही इज द मतलब कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। तो जब तक कि आप अपने एजुकेशन के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे बहैसियत तसव्वुर इंसान जानवर की सतह पर क्या करते रहेगा? काम करता है। तो सेकंड चीज मैंने आपको बताया, पहली चीज तो ये बताई कि आपको वही के जरिए क्या करना है? बच्चों को एजुकेट करना है, खुदा को रोशनास कराना है, और दूसरा तसव्वुर इंसान के जरिए उसको किससे इंट्रोड्यूस कराना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंट्रोड्यूस कराना। आखिर में जो हमारा क्राइसिस है कि हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर लीडरशिप नहीं है, और जैसे मैंने इसको पहले भी आपसे कहा, तो वो चीज है कि हमारा इल्म जो है खैर के साथ जुड़ नहीं पा। कितने लोग मानते हैं कि इल्म जो है नुकसानदेह भी होता है? मेजॉरिटी मानती है कि इल्म फायदा होता है। अब मैंने अब थोड़ी देर पहले क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका इल्मन ला यनफ़उ, कि अल्लाह वो इल्म से बचा जो उनको नफा नहीं दे। मतलब क्या देता है? एटम बम इल्म नाफे है? एटम बम इल्म नाफे है क्या? नहीं, नुकसान पहुंचेगा। अगर अभी हम लोगों ने देखे कि खतरा मंडरा रहा था कि भाई एटम बम गिरेगा, तो एक हमारे डॉक्टर ने बोला, वो तो बोलते बॉम्बे में गिरेगा, अपन कल्याण में बैठे है ना। तो मैंने बोला उसको, उनको अगर डालना रहेगा ना तो बॉम्बे में, साउथ मुंबई में थोड़ी डालेंगे कि समंदर तबाह, वो डालेंगे थाना में। तो 50 किलोमीटर का रकबा अगर तबाह होता है तो कल्याण और भिवंडी भी जो है इंशाल्लाह नहीं रहेंगे। तो यहां पर ये चीज है कि इंसान जो है इल्म गैर नाफे भी क्या है? उसकी एक एंटिटी है, और हम लोग जो है इल्म नाफे और गैर नाफे के तस्वुर को नहीं समझ पाते। व्हाट्सएप पे आने वाली इंफॉर्मेशन क्या है? अक्सर क्या है? तो ये इल्म बेकार की चीज है। अब इस पे 3 कैटेगरीज को हमको डिफरेंशिएट करना है। एक है इंफॉर्मेशन, एक है नॉलेज, और तीसरी चीज क्या है? विजडम या एक्सपर्टीज, है ना। इंफॉर्मेशन क्या होती है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन दुनिया में है। आपको मालूम है इंफॉर्मेशन कितनी देर में डबल हो रही दुनिया में? कोई बता सकता है? दुनिया में जितनी इंफॉर्मेशन आज की डेट में है कितने दिन में डबल हो रही? हाँ, क्या बोले आप? समझे, जितनी इंफॉर्मेशन है ना उसको डबलिंग टाइम बोलते हैं उसको। डबलिंग टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है 17 साल है कि 17 साल में इंफॉर्मेशन क्या हो रही? डबल हो रही। लेकिन आगे जो प्रोजेक्टेड है एआई के बाद 1.5 साल में इंफॉर्मेशन क्या होगी? डबल हो जाएगी। तो मतलब है कि इंफॉर्मेशन हमारे काम की चीज नहीं, हमको क्या चाहिए? नॉलेज। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फर्क है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सही बोल रहे, बोलिए। हाँ, इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं होती। आपने बोल दिए थे, जो बोले थे बोलिए। इंफॉर्मेशन को जब ऑर्गेनाइज करते तो क्या बनती है? नॉलेज बनती है। और नॉलेज के बाद एक स्टेप आता है कि जब वो नॉलेज को हम अप्लाई करने की पोजीशन में आते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? विजडम या हिकमत कहते हैं। इसलिए उर्दू में एक वर्ड क्या है? हिकमत अमली। कि जब हम अपनी नॉलेज को, प्रूडेंट इंग्लिश में बोलते हैं, कि जब हम अपनी नॉलेज को दुनिया के अंदर अप्लाई करने की पोजीशन में आते हैं। और ये कब आते हैं?
जब हम अपने सोर्स ऑफ नॉलेज के जरिए दुनिया के कॉन्टेक्स्ट को ऐड करके हम उसको अप्लाई करने की पोजीशन में आते। तो मैं जो आपसे बात कह रहा था कि हम इल्म को खैर के साथ कनेक्ट करने में क्या है नाकाम है, इल्म नाफे के साथ कनेक्ट करने में क्या है नाकाम है। आप जो भी एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं, अगर उसके नतीजे में दुनिया के अंदर आप कोई मीनिंगफुल चेंज नहीं ला सकते, कोई दुनिया को बेहतर नहीं बना सकते, है ना, दुनिया को एक आरजी जन्नत नहीं बना सकते, तो वो इल्म नाफे नहीं। तो हमको जो तीसरी चीज बच्चों को समझानी है कि इल्म नाफे कैसे बनता है ना, इल्म नाफे कैसे बनता है। एक डॉक्टर के पास बहुत सारा इल्म नाफे बन गया है, उससे लोगों को फायदा पहुंच रहा है, वो क्या कर रहा है, दूसरे गलत काम कर रहा है। एक इंजीनियर है, बहुत सारा इल्म नाफे हासिल कर लिया उसने, तो क्या बिल्डिंग सही बना रहा है। तो ये इल्म नाफे को भी नाफे बनने के लिए वो पर्सनालिटी को भी होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो कुरान ने कहा कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास, कि तुम वो बेहतरीन उम्मत है जो लोगों के लिए क्या की गई, बर्पा की। तो जब तक कि हम ये इल्म के डायमेंशन को सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फिशनेस से निकाल करके बच्चों को अगले 10 सालों में तसव्वुर नहीं देंगे कि आपके इल्म हासिल करने का मकसद सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि इंसानियत की भलाई है, तब तक कि आप अच्छे इंसान प्रोड्यूस नहीं करें, है ना। और ये फितरत का कानून है। आप देखिए कश्मीर जाने कितने लोग हुआ है, कश्मीर में जब वो सेब का सीजन आता है, तो मैंने कभी देखा नहीं था, जब मैं गया तो वहां पे जो सेब का सीजन था, तो दरख्त बहुत छोटा होता है और उस पे इतने सेब आते कि वो टहनियां पूरी क्या हो जाती, लटक जाती। अब वो उसको झाड़ को देख के लगता नहीं कि इतने सेब देगा। तो इंसान की भी एक कैफियत होनी चाहिए कि मादी वजूद जो उसके पास है, उससे ज्यादा क्या वो फैज देने की पोजीशन में आता है या नहीं। तो फितरत का कानून यही है कि भाई फितरत क्या करती है, दूसरों को देने वाली बनती है, वो खुद को सेल्फ सर्व करने वाली नहीं बनती। तो ये मैंने आपके सामने, मैं आपको रिवाइज करूंगा कि पहली चीज तो हमने ये समझी कि हम अपने बच्चों को जब भी एजुकेट करेंगे सेकुलर एजुकेशन के अंदर, तो हमें कोशिश करेंगे कि वो जो भी उसको साइंस पढ़ा रहे हैं उसको वही के जरिए कनेक्ट करवाएंगे, है ना। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको कुरान, हमको कनेक्ट होना पड़ेगा। हमारा प्लग लगेगा तो आगे लाइट जलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपसे कहा कि भाई हमको जो है ये बच्चों को बताना पड़ेगा कि इल्म के नतीजे में आपका क्या होना चाहिए, अल्लाह पर यकीन और ईमान बढ़ना चाहिए, और ईमान के नतीजे में आपके अखलाक दुरुस्त होने चाहिए, आप बेहतर इंसान बनने चाहिए, आपको यकीन रखने वाला इंसान बनना चाहिए। आज जो हम इंसान प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या है, वो बहुत ही इनसिक्योर इंसान है। अरे कल क्या होगा, अब मेरा आगे पैसे, आगे मेरी जिंदगी कैसी चलेंगी, उसकी फिक्र खाली इसी में वो क्या हो रहा है, भूला जा रहा है। लेकिन मोमिन वो होता है जिसको कल पे क्या होता है, तवक्कुल होता है कि जो खुदा आज मेरा ध्यान दे रहा है, आज मुझे संभाल रहा है, वो कल भी क्या करेगा, संभाल। और उसके अंदर इल्म के नतीजे में खैर को पैदा करने का क्या होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। और ये कब होगा, जब एक आइडियल टीचर का तस्वुर उसके सामने आएगा। देखिए हम चीजों को पढ़ सकते हैं लेकिन वो किताबों में रहेगी। अगर आपका डिपिक्शन एज ए टीचर क्लासरूम में ऐसा है जो अपने बच्चे को हर तरह से खैर पहुंचाने के लिए, नफा पहुंचाने के लिए, एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए आपके अंदर वो तस्वुर है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट या ट्रांसमिट कर सकते हो, क्या उसके अंदर इनकल्ट्रेट कर सकते हो। होता क्या है कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे पा रहे। इंसान, बच्चा चलना कोई किताब से सीखता है, किससे सीखता है, बात करना किससे सीखता है, वो देखता है, वो डेमोन्स्ट्रेशन देखता है, उसी से लर्निंग करता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि इंसानों के अंदर क्या है, मिरर न्यूरॉन्स करके होते हैं, जो इंसान को सिखाते खाली कॉपी पेस्ट करना कैसा है। बहुत आसानी से इंसान बड़ी बड़ी चीजों को क्या कर लेता है, सीख लेता है। तो यहाँ पर हमको वो टीचर के रोल से निकल करके जो वेस्ट की डेफिनेशन है, हमको मुरब्बी की डेफिनेशन अपनानी चाहिए कि हम बच्चों के क्या है, मेंटोर्स हैं, हम बच्चों के लिए क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। जब तक कि हम ये रोल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक कि हम चेंज नहीं ला सकते। और इसका मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अगर मुरब्बी के रोल में आते हो, नतीजे में आपके घर के बच्चे क्या होंगे, बेहतर बने, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। हम जो बात वो बोलते ना कि एक कहने वाले ने बहुत प्यारी बात कही कि जो हमारे वालिदैन जिस खुदा से डराते हैं उससे डरते क्यों नहीं, है ना। हमको बोलते हैं मत करो लेकिन खुद क्या करते करते। तो टीचर का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि बच्चों के अंदर इस यकीन को
खुदा के यकीन को ट्रांसफर करे, इस खैर के यकीन को ट्रांसफर करे, एक अच्छा इंसान होने का क्या मतलब है इसको ट्रांसफर करे। ये आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देना है। जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो आप ट्रांसमिट करेंगे, ये काफी नहीं है ना। इल्म क्या होता है? इल्म सिर्फ जानने का नाम नहीं, इल्म वो है जो आपके एहसासात, जज्बात का क्या बने, पार्ट बने। जब वो ये बनेगा तो बच्चे की पर्सनालिटी क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। तो टेक होम मैसेज के अंदर मैं समझता हूँ कि कुछ आपको बुक्स के नाम भी मैं सजेस्ट करूंगा। कि पहली तो चीज ये मैंने कही कि कुरान पढ़िए। कुरान के अंदर तस्कीरुल कुरान करके किताब है, तफसीर, आप वो पढ़िए, वो बेटर है, मतलब समझने के लिए आसान है, और उसका कोई फिरके मसलक से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, साइंस का जो टॉपिक है उस पर कुरान एंड मॉडर्न साइंस, मोरिस बुकाइली की किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और एक किताब है मजहब और जदीद चैलेंज, गॉड अराइजेस करके, ये आप पढ़िए। इसमें आपको ये पूरा जो है तस्वुर आपको समझ में आएगा। और आइडियल प्रॉफिट के लिए, मतलब आप तस्वुर नबी कामिल के लिए जो है आप एक किताब पढ़ सकते हैं, पैगंबर इनकलाब और सीरतुन नबी। ये दो किताबें, सीरतुन नबी और पैगंबर इनकलाब। फिर एक आखिर में हम जो ये चाहते हैं कि जब हमारा एजुकेशन सिस्टम है तो उसमें हम 3 डायमेंशन पे बच्चों की पर्सनालिटीज पे काम करना चाहते हैं। एक तो है कि उसकी क्रिटिकल अकल उसकी मजबूत हो, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो, रैशनलाइजेशन का पावर पैदा हो। दूसरा ये कि उसकी अखलाकी हिस्स क्या हो, बेदार। और तीसरा एक अहम पॉइंट है, इस पर फिर कभी बात करेंगे, कि उसके अंदर जमालियाती हिस्स क्या हो, बेदार हो। उसके अंदर सेंस ऑफ ब्यूटी क्या हो, उसकी डेवलप हो। और अल्टीमेटली ये कि वो रूहानी तौर पर जो है मैच्योर हो सके। तो यही कुछ बातें थी। मैं चाहूंगा कि कुछ सवालात आप लोगों के जहन में हो तो आप पूछे, ताकि हम लोग जो है इसको कंक्लूड करें। मैं 12th में था, तो मराठी के टीचर थे, वो बोल रहे थे कुछ गला क्या, मतलब ऊपर के फ्लोर पे तो बहुत पानी आया, नीचे कुछ गला क्या। तो अगर सवाल जहन में आ रहे तो मतलब कुछ गला। हाँ, हमको हर चीज जो मैंने आपसे कही ना, आप इसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए कि सारी बातें, बहुत सारी बातें इसमें गलत हो सकती है ना। आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपको क्वेश्चन करने की आदत, चूंकि हम क्वेश्चन नहीं करते, हमारे स्टूडेंट भी क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं। हालांकि इल्म को प्रोपोगेट करने का, इल्म को बढ़ाने का, इल्म में बढ़ने का सिंगल इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप क्वेश्चंस को क्या करें। मैं मेरे बच्चों को जब पढ़ाता हूं तो मैं उनको ये बोलता कि जो जहन में डाउट है उसको क्या करो, सवाल बनाओ। फिर वो सवाल को क्या करो, बेहतर बनाओ, और इम्प्रोवाइज करो कि सवाल और अच्छे तरीके से कैसे बन सकता है। जब बच्चा सही तरीके से सवाल को बना लेता है तो नतीजे में जवाब उसके बिल्कुल सामने होता है। तो आप लोगों के जहन में कुछ सवाल है? क्योंकि मैं समझता हूँ अगर कुछ समझा होता तो आदमी के जहन में कुछ तो सवाल, कि सब समझ में आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके पेशेंस लिसनिंग का। और मैं ये पूरी मैनेजमेंट को और डॉक्टर ओनेजा मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करूँ, कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ सीखूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much. This lecture on philosophy of education was a profound inspiration of the deeper purpose behind teaching and learning, reminding us that education is not just about information, but about shaping minds, values, and humanity. Thank you so much, sir, for giving such a compelling talk. The depth of experience and clarity brought a fresh perspective that truly resonates with our audience. Thank you so much. Welcome back, everyone. I hope you had a chance to stretch and recharge. We are now ready to dive into the next part of our program. We have a knowledgeable speaker with us who will be sharing practical insights on enhancing teaching development for our students. It is our distinct honor and privilege to welcome Professor Mukhtar a distinguished motivational speaker, seasoned educationist, a prolific writer whose lifelong dedication to learning and teaching continues
inspiring benefits. Professor Mustafa is the biggest professional journey as a lecturer in electrical engineering at MS House College, Mumbai. At the time session in his life, unfolded when he was blessed with a rare opportunity to serve in the Holy Grammar. Upon representing India, Professor Saikar immersed himself in intellectual and community driven work of gaming. With unwavering passion for learning and sharing knowledge is further evident in his literary contribution across the world. Ethical and Islamic. He plants the seed of thought with care that welcomes the guide beyond compare. With mind is spark and heart is light, that welcomes the soul to scale behind. Now, let's put our hands together as we warmly invite our HF Soha ma'am to step forward and felicitate our esteemed guest. The youth from the world everyone. Sir. Welcome. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. With that, I respectfully invite Professor Mustafa to take over the session. Yes. Assalamu alaikum. This is my pleasure to conduct the lecture as invited for empowerment of the teachers and their function. Next slide, please. Next. 1 minute. Go back. See, there is a very good example. A pen can be more valuable than gold, and a teacher can be powerful than a warrior. So, teacher is more powerful than the warrior in the battlefield. Next. It is the history in the holy book, Bible, Torah, Zabur, that when the first human was created, he was taught how to pronounce. When Allah subhanahu wa ta'ala created Adam, so first thing what he did with him after creation, وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, and we taught him all the names. It is not the names, it is how to describe a thing, and that is the only creature of the God which can describe the things to others by verbal communication. It is no other creature can do this thing. No doubt there are other species, say for example a dog, a cat or a lion can say create sound, and after creating the sound he can say attract his own pieces but cannot communicate as a man can communicate. So this is the first thing what was taught to the Adam alayhi salam. The importance of education is every religion. We cannot say it is only in Islam. It is all the religions. As I cited, the example of creation of Adam is also in Torah, in Zabur, in Bible, in many things. Similarly, it is also in other books also.
The importance of education in every religion, first divine words to Prophet Muhammad, it was Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Read in the name of God. So the first word was a direction or an order or emphasizing on the subject that you have to read. The first is read. And this is, there are four verses in that. Read in the name of your Lord who created man from an embryo. Read, for your Lord is most beneficent who taught by the pen. Allam al-insan bil qalam. And surprisingly, second words which came was qalam. Surah Qalam is the second chapter it was relieved. It shows the importance of reading and writing. The second chapter, number 68, revealed the name is pen. The verse 1 says, I call to witness the pen and what they inscribe. Now, how important education is there? The Prophet, when there was a battle of Badr, you know, it was fought between Mushrikeen and Makkah and Muslims who were in Medina. So the question is, the people in Makkah, they were caught in the battlefield. No doubt this was a big victory for Muslims. But the thing is, at those times, either a person can be taken as a prisoner of war and put in the jail unless somebody ransom him, that is, pay something and relieve him. But here in the Battle of Badr, what happened? Those persons who were caught, they were asked to teach Medina people how to read and write, and that was the ransom. It was the ransom to release them. And this is one of the best examples anybody can give, that they were asked to teach, and this teaching is so important, they were relieved. Hindu scripture, Rig Veda, it says, education opens the mind to noble constructive thoughts from all directions. It teaches open-mindedness and the value of diverse knowledge. It is in Rig Veda. Second is Manu Samitra, learning is the most noble wealth, it cannot be stolen. Everybody knows, nobody can steal your knowledge. It cannot be stolen, it brings you honor and respect. Chanakya Niti, chapter 2, verse 4. Education is your best friend. An educated person is respected everywhere. Education breeds the beauty and the youth. Then comes the most important, Bhagavad Gita. It is knowledge is superior to material offering. All action culminate in knowledge. Now let us move towards our goal of education and how to empower teachers for creating better atmosphere in the classrooms. There are many modern tools in the field to help the teachers and the student for acquiring best of knowledge. One of them is AI, artificial intelligence. In today's rapidly evolving education landscape, numerous modern tools have emerged to enhance the teaching and learning experience. These tools are designed to support both teachers and students in acquiring deeper, more meaningful knowledge. Among the most transformative of these innovations
artificial intelligence, that is AI has begun to play pivotal role in reshaping education by offering personalized learning experience, automating administrative tasks, and providing intelligent tutoring system. Its ability to analyze students' data and adapt to individual learning needs makes it a powerful resource in the pursuit of academic excellence. As educational institutions continue to embrace technology, the integration of AI stands out as a promising step toward more effective, more efficient, inclusive, and effective education. How many of you use AI tool for anything? It's so easy that if you go on Chat GPT and ask any question, it responds immediately, and the knowledge is far better than just to going through hundreds of books. You see, when I was working as a professor in Sabusuddin, for finding out a small thing to teach, I have to go to British Library. British Library had so many technical books, and after going through there, we used to learn or read books and books to teach the students. Now it is at your fingertips. Just go to ChatGPT, ask the question, and it gives the answers. No doubt it is not very good for the students and teachers too, because your knowledge is only limited. It becomes there and there only. You will just put the question and ask the GPT. So this will not increase your knowledge. It depends how you are going to use that GPT. Now, education is to set a positive and engaging tone in classroom before beginning your lecture. This could include sharing a light-hearted jokes or an insightful quote, depending on the maturity level of the students. It's essential to create an atmosphere in the classroom so that students can accept you. And students are always in the mood of not accepting your, there are very few students who are really interested in knowledge sharing. Definitely, when you go in the classroom, you have to control the atmosphere. How to control the atmosphere? So just create an atmosphere in the classroom so that they will be able to listen to you. Say, no doubt, Dr. Murumkar just asked one question that, do your students respect you? And there was a lot of humming that they don't, or they yes, or something like that. I will tell you one of the things in my class, about my students. Once myself and one other Professor Siddiqui, we were sitting in the canteen, taking our tea, and then a student, he came to me and asked me, "Sir, can you leave now because we want to occupy this?" I said, "Go ahead, what is troubling you?" They said, "No, sir, we are going to smoke." That is the respect. That is the respect they were carrying at our time. Now the time has changed. So we ultimately left the place
just to allow them to smoke. We didn't say why you are smoking, why, but it was that the respect shown by them. So we have to respect them. So you have to create an atmosphere first. In my opinion, a student will not fully engage their natural curiosity or desire to acquire knowledge unless the classroom environment actively encourages them to ask the question. A student will not ask you the question unless you create an atmosphere. It is better. One of my professor in electrical engineering, Srinivasam, I remember him. He said, confuse the students. Confuse them so that they will try to use their mind and try to understand why it is happening so. So, no doubt our was electrical field, so they used to put some question which used to get us confused, and then we start thinking. So confuse the students a little bit. So, in fact, there are some students who come to the classroom just to attend a lecture, fill their attendance sheet, and there are some who are coming to the classroom to acquire knowledge. Present ideas in such a way that challenges, even momentarily confuses students, prompting them to think it critically and seek clarity. Avoid over explaining. Don't explain too much to the students. This will be just like spoon feeding. Spoon feeding is not good for the students. You are doing this duty considering that I should explain in a better way. But if you explain it totally, then nothing is left them, nothing is left for them to learn. Because the teacher's main job is no doubt to teach, but to make them learn also. It is a double factor, to teach and also make them learn. Important roles of dual roles. It is learner and teacher. A teacher has to be a learner, or a student also has to be a learner, and a teacher has to teach also. The phrase learn and teach implies a continuous cycle of knowledge. A person must always be a learner first before becoming a teacher. So you have to learn first, then you become a teacher. This encourages lifelong learning, humility, and sharing knowledge for the betterment of others. Relevance of modern educator. Today, teachers play a critical role in shaping minds and morals. Encourage teachers to consider their work not just as a job, but as an act of worship and service. Now, here the question is, don't take it as criticism. There are two types of teachers. As there are two types of students, similarly, there are two types of teachers. A teacher becomes a teacher just to get a job and provide meal for his family. That is, not from their own heart, they wanted to teach and come in this profession. There may be few. I'm not talking a much bigger thing about myself, but when I was in, I remember him, he asked a question, what you people want to become? As we were in technical school, everybody wanted to become a engineer, or somebody wanted to become a doctor, and I was the only person who said I want to become a teacher. He said, why? He said, I want to share my knowledge. It is my knowledge I want to share, and it happens so that
uh, I became a teacher or lecturer after my passing my engineering. Now it is necessary for management that we have to empower the teacher, refer to giving teachers the confidence, tool, autonomy and support they need to effective, creative and inspired in their teaching roles. It is both a philosophy and a practice that values teachers as professional and key agent of change in education. So the management has to give you some power to implement in such a way that it is for betterment of the students. You should feel confident enough that whatever action you are taking, management is not going to come against it if your actions are correct. Even though it is often applied to leadership or policy, empowerment also a critical skill for teachers themselves. It is a skill. Why teacher skill development essential? Adapting to technology and social changes, commitment to lifelong learning, self-reflection and growth. You have to empowering the teachers constantly reflect on their methods and seek self-improvement. They actively pursue professional development, learning new pedagogies, technologies, and classroom management strategies. Key skill for teacher: communication and interpersonal skill. The two skills are very important for the teachers. Communication, the language. If you are commanding your language, if your teaching is in Urdu, you must have a proper communication skill, because the words, flowing of the word does not mean anything. Putting the words in a proper sentence, which is also important. Similarly, interacting with the students, that is also very much important. Technological proficiency, digital tools, online assessment. You have to also learn technology, computer technology, working with the sheets, Excel sheet, words, and how to manipulate, how to use again here modern methods. That is, when you are writing, at least in writing English, you know there is a supporting Gemini is the program which can correct your sentence, correct your wording. Similarly, there is in Urdu there is one class, this one with it's named Bilal. Bilal is the software program which can correct your Urdu. Critical thinking and reflective practice. Emotional intelligence and classroom management. In classroom, you may come across some girl that is very emotional, having some problem at home. Say, when I was conducting some lecture in GM Women's College, we were having a time that some of the girls, they used to go to our psychological department and say that I want to die. Why? And there are problems at home. They are never to face. So here you have to encourage the student to talk what is their problem and try to solve. You see, it's a very difficult task, but you have to learn it. Psychology is most important. In
our professional, when we were working as say lecturer, we had some classes conducted by some psychological teachers to know psychology of students. It is very essential to know the psychology. Teaching and motivating a student to learn are closely related but fundamentally different. Teaching involves delivering knowledge, explaining concepts, and guiding students through structured content. It focuses on what and how of learning. In contrast, motivating a student is to learn target the why. So it inspires curiosity, builds interest, and encourages desire to seek knowledge independently, while teaching equips the student with tools. Motivation gives them the drive to use these tools beyond the classroom. A teacher as leader and role model. A teacher always is a role model for the students. Influence goes beyond the classroom. You are influencing the students, it goes beyond the classroom. It may reflect in their everyday life. Model punctuality, curiosity, and compassion. A teacher also has to be punctual in his attendance, punctual in taking the classes. You maybe some place we find that it is difficult to attain the classroom, but regular absenting, breaching classroom late, this is very much, it will affect the students very much. Uphold justice and ethic behavior. Sometimes you have to do the justice among the two quarreling students. You have to find out who is correct. Continuous professional development and educators' duty and privilege. Engage in reading, sharing, and trying new methods. Mentor junior colleges. Confidence and motivation. Empowerment builds a teacher's confidence. Confident teacher inspires the students, engage more deeply in their work, and stay motivated even under challenging circumstances. As educators, you carry the torch that lights the path of generation to come. May we continue to learn, grow, and inspire, fulfilling this noble trust with excellence and integrity. Now, before ending, if I want to ask you, if you have got any question in your mind, just go ahead. If you want to ask anything concerning technology, computers, or anything else. So here I end it. In the end, I extend my heartfelt thanks to each of you, Principal Dr. Oneza Farid, the Chief Guest Management of Aqsa, and for your time, attention, and sincere participation. Thank you very much.